चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दो टोक पैगाम दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन ख्वाब ही रहेगा। Pakistan has been on the receiving end one after another of unfounded allegations without any supporting evidence. And all over the world it is known you're innocent and proven guilty. Accuse me of a crime but produce the evidence and at least have a trial. Here India has become judge, jury and executioner, and they're not targeting military targets. They targeted civilians and innocent children. They violated Pakistan's sovereign territory. Any sovereign nation on the planet would have no choice but to respond in such a circumstance. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दो टोक पैगाम दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन ख्वाब ही रहेगा। Pakistan has been on the receiving end one after another of unfounded allegations without any supporting evidence. And all over the world it is known you're innocent and proven guilty. Accuse me of a crime but produce the evidence and at least have a trial. Here India has become judge, jury and executioner, and they're not targeting military targets. They targeted civilians and innocent children. They violated Pakistan's sovereign territory. Any sovereign nation on the planet would have no choice but to respond in such a circumstance.